Hello students, a very good morning to all of you. I am your SST teacher. I am going to teach you chapter first, that is the earth's surface. Let's get started. There are three boys. Do you know that our earth is actually round like this ball? जो पहला बच्चा है वो बोलता है कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक्चुअली में राउंड की तरह मतलब बॉल की तरह राउंड है. Then second boy replied, but we live on flat land. How can we live on a round surface? Would not be fall off. जो सेकंड बच्चा है वो बोलता है हम लोग तो लेकिन फ्लैट लैंड पे रहते हैं, हम लोग राउंड वाले सरफेस पे कैसे रह सकते हैं, हम लोग गिरेंगे नहीं. देन थर्ड बॉय रिप्लाइड, वेल लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट. पहले के लोगों को ये लगता था कि अर्थ फ्लैट है, बट सम एक्सप्लोरर would went around the earth prove that is indeed round in shape. मतलब जो पहले के ज़माने में लोगों को क्या लगता था जो अर्थ है वो फ्लैट है, बट कुछ साइंस रिसर्च इन लोगों ने रिसर्च किया कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है, वो राउंड है शेप में. इनफैक्ट द शेप ऑफ द अर्थ इज स्पैरिकल, और जो अर्थ का शेप है वो स्पैरिकल है. द अर्थ, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्पैरिकल इन शेप, कॉन्टिनेंट, ओशियन. There are 7 continents in the world: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, Australia, and 7 oceans in the world. 5 oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean. Okay. Now come to the topic, the Earth. The Earth is the third planet from the Sun. जो Earth है वो third planet है sun से. It is the only planet known to have an atmosphere that contains oxygen. Earlier it was believed that the earth was flat. पहले लोगों को ये लगता था जो अर्थ है वो फ्लैट है. कौन सी ईयर में? 1519. Ferdinand Magellan, a sailor from Portugal, set out in the westward direction. After sailing for 3 years, the members of ship's crew reached the same port from where they had begun their voyage. This established that the earth was round, not flat. Continents and oceans. You have already studied that big land masses on the earth's surface are called continent, and the large continuous mass of salt water are called oceans. Seas, gulf and bays are the smaller part of this ocean. जो गल्फ है और बेस है वो क्या है? स्मॉलर पार्ट है ओशियन का. गल्फ मीन्स क्या होता है? ए लार्ज एरिया ऑफ सी दैट इज पर्टिकुलर सराउंडेड बाय लैंड. एंड बे मीन्स क्या होता है? अ पार्ट ऑफ द सी और ऑफ ए लार्ज लेक पर्टिकुलरली सराउंडेड बाय अ वाइड कर्व ऑफ लैंड. ओके, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस. ये जो मैप है वो क्या शो कर रहा है? कॉन्टिनेंट्स एंड oceans. There are 7 continents in the world. These are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Asia is the largest continent. Asia is the largest continent and occupies 1/3 of the world's land area. This continent is surrounded by ocean on 3 sides. To the earth lies, to the north lies the Arctic Ocean. To the east lies the Pacific Ocean, and to the south is the Indian Ocean. And India and China, the 2 most populous countries in the world, are located in this continent. Okay. Africa. Africa is the second largest continent in the world. जो अफ्रीका है वो second largest continent है in the world, मतलब वर्ल्ड में. और first largest continent कौन सा था? एशिया. To its north lies the Mediterranean Sea. To the east lies the Indian Ocean, and to the west the Atlantic Ocean. Africa has diversity in landforms. It is home to the Sahara Desert, the largest long hot desert in the world. जो सहारा डेजर्ट है
वो हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड में. नाइल रिवर, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, एंड द माउंट किलिमंजारो, which is the highest mountain in Africa. North America. North America is the third largest continent in the world. जो नॉर्थ अमेरिका है वो थर्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट है वर्ल्ड में. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट एंड द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. It has high mountains such as the Rockies and large lakes. वहाँ पर large mountains हैं, large lakes हैं such as Great Lake, which is group of 5 fresh lakes. The continent is home of many developed countries of the world such as the United States of America and Canada. South America. South America is the fourth largest continent in the world. जो साउथ अमेरिका है वो फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट है. बोथ द अमेरिकाज आर joined by the Isthmus of Panama. A range of mountains called the Andes lies in the western part of South America. The famous Amazon rainforests are located here. What is rainforest? A dense forest that receive heavy rainfall. Okay. And what is isthmus? A narrow piece of land that joins two larger area and has water on both sides. Okay. Antarctica. Antarctica is the coldest and the fifth largest continent in the world. जो अंटार्कटिका है वो सबसे कोल्डेस्ट है और फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट. इसको वाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है एज इट ऑलवेज कवर्ड बाय अ थिक कारपेट ऑफ आइस एंड स्नो. यहाँ पर आइस हमेशा रहती है. ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, it is the world's only continent which has no permanent human habitation. Antarctica is the largest cold desert in the world. Did you know? Antarctica is the largest cold desert in the world. Now come to the Europe. Europe is the sixth largest continent in terms of size. Europe is home to a famous mountain range called an Alps. Europe and Asia are together called Eurasia. यूरोप और एशिया इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया है? यूरोशिया. एंड फॉर्म द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन अर्थ. यूरोप इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरेनियन सी इन द साउथ, ईस्ट टू द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. Developed countries such as the United Kingdom and France are the part of Europe. Australia. Australia is the smallest continent in the world. जो ऑस्ट्रेलिया है वो smallest continent है वर्ल्ड में. It is the only continent which is only a country. It is an island and is surrounded by water on all sides. Australia is famous for its Great Australian Desert and the Great Barrier Reef. Coral reef means क्या होता है? A hard natural structure under the sea that is formed from coral. Oceans. There are 5 oceans. कितने oceans हैं? 5. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, the Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. A rich variety of plants and animals are found in these oceans. Together they are called marine life. Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest and deepest ocean in the world. जो Pacific Ocean है वो largest ocean है और सबसे deepest ocean भी है. It covers about 30% of the Earth's surface. It separates the two Americas from Asia and Australia. Some of the world's most active and dormant volcanoes are found in the basin of the Pacific Ocean. Dormant means क्या होता है? Not active or growing now but able to become active or grow in the future. Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the world's second largest ocean.
It separates Europe and Africa from North America and South America. There is an underwater mountain range on its ocean floor known as the Mid-Atlantic Ridge. Although this ridge is mostly underwater, a portion of it is elevated enough to extend above sea levels. What is ridge? A mountain range underneath the ocean. Now, Indian Ocean. The Indian Ocean is the third largest ocean in the world, which lies at its heads. It separates East Africa from Australia. It is the warmer than the Pacific, Atlantic, and Arctic Ocean. Southern Ocean. The Southern Ocean is the fourth largest ocean in the world. जो साउथर्न ओशियन है वो फोर्थ लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में. इट इज़ लोकेटेड अराउंड द साउथ पोल नियर अंटार्कटिका. ये कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ पोल जो अंटार्कटिका के पास है. द साउथर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन एंड द इंडियन ओशियन कंबाइंस टू फॉर्म द साउथर्न ओशियन. ओके. आर्कटिक ओशियन. द आर्कटिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. जो आर्कटिक ओशियन है वो सबसे छोटा ओशियन है पूरे वर्ल्ड में. इट इज़ लोकेटेड अराउंड द आर्कटिक सर्कल. ये कहाँ पर लोकेटेड है? आर्कटिक सर्कल में. इट इज़ फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन. ये जम जाता है विंटर सीजन में. ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट्स टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग एंड फ्लोटिंग आइसलैंड. गर्मियों के टाइम पे क्या होता है? इसकी जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है. ठीक है. एंड व्हाट इज आइसबर्ग? एन एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग द sea. Okay, thank you and have a nice day, students.